Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed the creative writing of poem to grandparents of your Wordsworth English Reader book. And I'm sure all of you must have completed all the exercises of poem to grandparents. Students, today I'll be starting with lesson 5 of your Wordsworth English Reader book, that is Gulliver's Travel. So all of you, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 39. Students, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page 39 as I'll be starting with lesson 5, Gulliver's Travel. Now, students, before I read this lesson, have you heard of Christopher Columbus? He was the famous sailor who sailed across the world in a ship in search of India, but instead he reached America. सबने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में तो सुना ही होगा. He was a famous sailor and वो अपनी शिप में सेल उसने स्टार्ट किया that वो इंडिया पहुंचेगा. But वो सेल करते करते बेटा he reached America. So some people are adventurous like Columbus. Some people like to do new things. है ना? That includes danger and excitement both. So they are adventurous like who? Christopher Columbus. Then there are other people who are adventurous but only in their thoughts. कुछ लोग सच्ची में एडवेंचरस होते हैं, जो वो सोचते हैं वो वैसा करते हैं. बट कुछ लोग खाली एडवेंचर के बारे में सोचते हैं, ओनली इन देयर थॉट्स. दे डू नॉट डू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट रियल लाइफ में दे डोंट डू एनीथिंग. वन सच पर्सन वाज जोनाथन स्विफ्ट, एन इंग्लिशमैन हु वाज वेरी इमेजिनेटिव. और बेटा एक ऐसा ही एक पर्सन था जिसका नाम था जोनाथन स्विफ्ट. वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव मतलब इज टू थिंक अ लॉट. वो बहुत कुछ सपनों में बहुत कुछ सोच लेता था. ही रोट अ डिलाइटफुल स्टोरी, डिलाइटफुल विच रियली इज एंटरटेनिंग, जो आपको बहुत एंटरटेन करेंगे, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा. सो ही रोट अ डिलाइटफुल स्टोरी ऑफ अ सेलर हु विजिटेड स्ट्रेंज एंड यूनिक लैंड्स. और जोनाथन स्विफ्ट ने एक ऐसे सेलर अ पर्सन हु गोज ऑन अ शिप, जो शिप में सेल करता है उसको सेलर बोलते हैं. तो एक ऐसे सेलर के बारे में लिखी जो स्ट्रेंज और यूनिक, बहुत अजीब जगहों पे जाता है फॉर हिज क्वेस्ट ऑफ एडवेंचर, क्योंकि उसको कुछ नया करना था. एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट. सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस लेसन, लेट्स understand the meaning of the new words of this lesson. So all of you, please take out your English notebooks as we'll be writing the word meanings. So, students, we need to write the word meanings in your English notebook. The first word is adventure. And adventures means unusual and exciting experience. सबसे अलग और exciting experiences को adventures कहते हैं. कुछ नया, which has got lot of excitement experiences. Fine. So unusual and exciting experiences are known as adventures. What are adventures? Unusual and exciting experiences. Then the second word is distant. Distant means far away, बहुत दूर. Distant means far away. Then the third word is fascinated. And fascinated means strongly attracted. Strongly attracted. बहुत ज्यादा कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो उसको बोलते हैं
fascinated, strongly attracted. Then the fourth word is voyage, and voyage means long journey. Voyage means long journey. Voyage, long journey. Then the fifth word is violent, and the meaning of violent is very forceful or powerful. Very forceful or powerful. जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स और पावर इन्वॉल्व हो, दैट इज वायलेंट. जैसे आप मारपीट करते हो तो वायलेंट है. मारपीट करने में बहुत ज़्यादा फोर्स और पावर इन्वॉल्व होता है. देन द सिक्स्थ वर्ड इज ब्रेविंग, एंड ब्रेविंग मीन्स टू फेस विथ करेज, हिम्मत से सामना करना. ब्रेविंग मीन्स टू फेस विथ करेज. सो द सिक्स्थ वर्ड इज ब्रेविंग, and braving means to face with courage. Then the seventh word is drove. Drove means pushed, dhakka dena. Drove, pushed. So let's revise these 7 word meanings, then I'll erase and write the remaining one. The first one is adventures, which means unusual and exciting experiences. The second word is distant. Distant means far away. The third word is fascinated. Fascinated means strongly attracted. The fourth word is voyage. Voyage means long journey. The fifth word is violent. Violent means very forceful or powerful. The sixth word is braving, and braving means to face with courage. And the seventh word is drove. Drove means pushed. So I hope all of you have written these word meanings, children. Now I'm going to erase these and write the 8th one. And the 8th word is split. Split means टुकड़ों में बट जाना. To break. Split means to break. कोई भी चीज जब टूटती है तो वो टुकड़ों में बट जाती है, स्प्लिट हो जाती है. उसको हम क्या बोलते हैं? To break. Split means to break. Then the 9th word is scattered. And scattered means to spread in different directions. अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाना. स्कैटर्ड, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाना. कोई भी चीज जब आप गिराओ तो वो टूटती है. टूटना मतलब स्प्लिट होना. और टूट के जब वो चारों तरफ फैल जाती है तो चारों तरफ फैल जाने को क्या बोलते हैं बेटा? स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मीन्स चारों तरफ बिखर के फैल जाना. So split means to break, scattered means to spread in different directions. Then the 10th word is exhausted. And exhausted means very tired. Exhausted, very tired. The 11th word is drag, and drag means to pull. Drag means to pull, खींचना. Drag करना
pull करना, खींचना. The 12th, the last word meaning is limbed. Limbed, जब पाँव में चोट लगती है और हम लगड़ा के चलते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? limbed. Walked with difficulty, बहुत दिक्कत परेशानी के संग चलना. Walked with difficulty, that is limbed. Clear? So let's revise. The 8th word is split. Split means to break. The 9th word is scattered. Scattered means to spread in different directions. The 10th word is exhausted. Exhausted means very tired. The 10th word is drag. Drag means to pull. The 12th word is limbed. Limbed means to walk with difficulty. Now children, besides these word meanings, there are some phrases also given. Now let's write the meaning of the phrases below the word meanings. So अभी आप लोग जो phrases दिए हैं उनके meanings भी लिख लीजिए और समझ लीजिए, so that when I explain the lesson it will be easier for you to understand. So meaning of phrases. The first phrase is given at the bottom of page 39. Set sail. Set sail. And what do you mean by set sail? Set sail means to start a journey. Set sail means to start a journey. किसी भी journey की शुरुआत करना, especially by ship, that is known as set sail. Sail करना to start a journey. यहाँ पे you mean start a journey by ship. Fine. Then the second phrase is given at the bottom of page 40. That is row clear. आपको पता है ना, आप बोट को रो करते हो उसको मूव करने के लिए, आप नाव को खेते हो और नाव खेने को क्या बोलते हैं? रो, है ना. सो द मीनिंग इज रो करना, टू रो अ बोट. बोट चलाने को रो करना बोलते हैं, है ना. सो टू मूव अवे using a boat. To move away using a boat. And then the third phrase, again it is also given at the bottom of page 40. To make out. To make out means to see. To make out, to see. What do you mean by to make out? To see. So, I hope now all of you have written the 12 word meanings and the 3 meaning of phrases in your English notebook. Let's revise and then I'll read and explain the chapter to you. The first phrase is set sail. Set sail means to start a journey. The second phrase is row clear, and row clear means to move away using a boat. The third phrase is to make out, which means to see. Clear? So now these were the word meanings. I'm going to now read the lesson for you and explain it. First I'll read it. Please listen to me carefully as I read it. Lesson 5, Gulliver's Travel, page number 39. I'm only 42 years old. Still, I have already had many strange adventures in my travel to far-off lands of the world. Strange adventures aren't what you'd expect from someone named Dr. Lemuel Gulliver. But being a doctor in London
just didn't satisfy me. Traveling to distant lands in the world always fascinated me. So after qualifying as a doctor, I signed up as a ship's doctor and spent 3.5 years sailing around Europe. I accepted an offer from the captain of a ship named Antelope to be the ship's doctor on a voyage to the South Seas. We set sail from Bristol, England on May 4th, 1699, and after peacefully crossing the South Seas, we were hit by a violent storm off the west coast of Australia. Poor food and too much work while braving the storm caused the death of 12 of our crew and weakened the rest. So when the wind drove us onto some rocks and split the ship apart, only 6 seamen, myself included, had enough strength to get a lifeboat down into the sea and row clear of the ship and rocks. Suddenly, a strong blast of wind from the north overturned our little boat and scattered my companions. I never laid my eyes on them again. I began swimming in whichever direction the wind and the waves pushed me. I don't know how many hours I spent struggling, but just when I was completely exhausted and water seemed to be filling my lungs, my feet suddenly touched bottom. I took in several mouthfuls of air and looked up to heaven. It must have been about 8 in the evening. The storm had decreased and there was enough light to make out land about a mile away. I spent the next 2 hours trying to drag myself towards the shore. I was so weak and tired when I finally limped out of the sea that I dropped down on a patch of soft grass. Within moments, I was sound asleep. So students, this was the reading of the lesson Gulliver's Travel. Now about the story. Gulliver's Travels is Jonathan Swift's most famous work in English literature that tells about the adventures of Lemuel Gulliver, a ship's doctor who, because of a number of accidents, ends up visiting several unknown islands which are inhabited by strange people and animals. बेटा जोनाथन स्विफ्ट ने इमेजिनरी एक कैरेक्टर बनाया डॉक्टर लैम्यूल गलिवर एंड उसने जो जो कुछ सोचा था वो सब कुछ अपने बुक में लिखा, जिस बुक में ये डॉक्टर लैम्यूल गलिवर उसकी स्टोरी का डॉक्टर था और वो शिप में सेल करता है और इतने अनयूजुअल आइलैंड्स पे जाता है और वहाँ पे इतने स्ट्रेंज तरह के लोग और एनिमल देखता है, वो पूरा इस लेसन में दिया है. एक्चुअली इस बुक में लेसन उसका एक पार्ट है. क्लियर? सो नाउ आई विल एक्सप्लेन the lesson Gulliver's Travel, but you should know that who's the author of Gulliver's Travel. So you should know Jonathan Swift. Writer कौन है बेटा इस lesson का? Jonathan Swift. So keep in mind. I'm only 42 years old. Still I have already had many strange adventures in my travels to far off lands of the world. Now Dr. Lemuel Gulliver is writing that वो सिर्फ 42 years का है and इस एज में भी उसको इतने स्ट्रेंज, इतने ढेर सारे एडवेंचर्स उसने अपने जो लाइफ में ट्रैवल किया है वहां से उसने एक्सपीरियंस किया है एंड टू फार ऑफ लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वो दुनिया के वो दुनिया की कई अजीब अजीब जगहों पे गया है और उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसने जो अनुभव किए हैं वो उसने यहाँ पे बताया कि 42 इयर्स में ही उसने बहुत सारे स्ट्रेंज एडवेंचर्स अपने जर्नी में फेस किए हैं और वो बता रहा है कि उसने फार ऑफ लैंड्स, दूर दूर की जगहें देखी हुई है वर्ल्ड की.
Strange adventures aren't what you'd expect from someone named Dr. Lemuel Gulliver. और वो कहता है कोई सोच भी नहीं सकता है कि अगर डॉक्टर है तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर है तो वो ही विल ट्रीट दी पेशेंट्स, ही विल नॉट ट्रैवल, उसके लाइफ में एडवेंचर एक्साइटमेंट ये कुछ नहीं होगा. बट सोचो वो डॉक्टर होके भी उसने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है. बट बीइंग अ डॉक्टर इन लंडन जस्ट डिडंट सैटिस्फाई मी. उसने पढ़ाई की एंड ही बिकेम अ डॉक्टर इन लंडन, बट वो डॉक्टर बन के ही वॉज नॉट सैटिस्फाइड. ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड इन द वर्ल्ड ऑलवेज फैसिनेटेड मी. डॉक्टर लैमुएल गिलिवर ने लिखा है कि उसे पूरी दुनिया में घूमना, दूर दूर की जगहें, दूसरी जगह देखने का बहुत शौक था. तो वो जब डॉक्टर बन गया लंदन में तो ही वॉज नॉट सैटिस्फाइड विथ हिज लाइफ बिकॉज ही वॉन्टेड टू ट्रैवल, ही वॉन्टेड टू सी डिस्टेंट लैंड्स. वो दूर दूर की दूसरे देशों को देखना चाहता था, दूसरी जगहें देखना चाहता था. सो ही वॉज नॉट सैटिस्फाइड बीइंग अ डॉक्टर, ही वॉन्टेड टू ट्रैवल अराउंड एंड सी दी वर्ल्ड. So after qualifying as a doctor, I signed up as a ship's doctor and spent 3.5 years sailing around Europe. अब जब वो डॉक्टर बन गया तो उसने अपनी जॉब शुरू की. तो उसने कहाँ डॉक्टर बन के ज्वाइन किया? एक शिप में. शिप में भी डॉक्टर्स की जरूरत होती क्योंकि शिप के जो क्रू मेंबर्स हैं जब वो सेल करते, मान लो रास्ते में कोई बीमार पड़ा, कुछ हुआ, तो उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत होती. तो शिप भी डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. तो डॉक्टर लेमुएल गिलिवर ने एक शिप में डॉक्टर, एज अ डॉक्टर ही साइन, है ना. और वो जो शिप थी वो 3.5 years यूरोप के आसपास उस शिप में सेल किया. I accepted an offer from the captain of a ship named Antelope to be the ship's doctor on a voyage to the South Seas. और डॉक्टर लैमुएल गिलिवर ने एक शिप जिसका नाम था एंटेलोप, उसके कैप्टन का ऑफर एक्सेप्ट किया जिसमें उसको शिप का डॉक्टर बनना था. एंड वो शिप जो है साउथ सीज की तरफ वॉयज, लॉन्ग जर्नी पे उस शिप को जाना था. We set sail from Bristol, England on May 4th, 1699, and after peacefully crossing the South Seas, we were hit by a violent storm off the west coast of Australia. डॉक्टर ने लिखा है कि उन्होंने अपनी जो जर्नी है शिप में वो स्टार्ट की 4 मई 1699 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड से, वहां से उन्होंने स्टार्ट की और आराम से शिप सेल कर रहा था. और जैसे ही साउथ सीज शिप ने क्रॉस किया, सडनली एक बहुत वॉयलेंट, बहुत पावरफुल तूफान आके शिप से टकराया. We were hit by a violent storm off the west coast of Australia. और वेस्ट कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे वो तूफान इनसे साउथ सीज में टकराया. Poor food and too much work while braving the storm caused the death of 12 of our crew. अब जब तूफान से शिप टकराया, एंड दिस इज वे बैक 1699, बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट 400-500 years पहले की बात है. तो उस समय तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी. तो जो क्रू था, क्रू किसको बोलते हैं? जो लोग शिप पे काम करते हैं वो क्रू मेंबर्स होते हैं. तो शिप का जो क्रू था, जब शिप तूफान से लड़ा तो शिप को बहुत डैमेज हुआ और वो क्रू शिप को बचाने के लिए, और खाने पीने का सामान भी सब नुकसान हो गया, और वो शिप को बचाने के लिए उस क्रू ने बहुत मेहनत की और इस कोशिश में 12 मेंबर्स क्रू के, उनकी डेथ हो गई. और बाकी जो बचे हुए मेंबर्स थे वो बहुत टूट चुके थे, कमजोर हो गए थे क्योंकि उनके पास ठीक से खाना नहीं था और उनके सारे संसाधन खत्म हो चुके थे. So when the wind drove us onto some rocks and split the ship apart, only 6 seamen, myself included, had enough strength to get a lifeboat into the sea and row clear of the ships and rocks. बेटा, अब डॉक्टर लैमुएल गिलिवर ने लिखा है कि जब वो वायलेंट स्टॉर्म साउथ सी में शिप को, उसने मतलब शिप वायलेंट स्टॉर्म से टकराया तो क्या हुआ? लड़ते लड़ते, तूफान का सामना करते करते और खाने की कमी हो जाने के कारण 12 क्रू मेंबर्स की तो डेथ हो गई. अब 6 क्रू मेंबर्स बचे थे जिसमें से डॉक्टर लैमुएल गिलिवर भी एक था. वो लोग किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थे. अब क्या हुआ? जब हवा का झोंका, क्योंकि शिप का सेल वगैरह सब तो टूट चुका होगा तूफान से, अब जब हवा जो है शिप को धक्का देते हुए कुछ रॉक्स की तरफ लाई
तो शिप जो है पत्थर से टकरा के पूरा टूट गया। एंड ओनली 6 men वर लेफ्ट ऑन दी, जो टूटे हुए शिप पे खाली 6 क्रू मेंबर्स बचे थे, जिसमें से एक डॉक्टर लेमल गिलिवर था। और उनमें वो भी लड़ते लड़ते अपनी जान बचाते बनाते इतने थक गए थे कि किसी तरह उन्होंने, आपको पता है ना शिप में लाइफ बोट होती कि अगर शिप डूबे तो आदमी लाइफ बोट में बैठ के अपनी जान बचा सके। तो वो 6 men बचे थे जिन्होंने किसी तरह एक लाइफ बोट में उन्होंने बैठा एंड दे स्टार्टेड, वो उसको बोट में बैठ के रो करने लग गए कि किसी तरह आगे निकले, वहां से जान उनकी बचे, वो आगे निकले। Suddenly a strong blast of wind from the north overturned our little boat and scattered my companions. तभी क्या हुआ, जब वो लाइफ बोट में बैठ के वो लोग रो कर रहे थे, तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और उसने उनकी जो बोट थी उसको पलट दी शिप में। और क्या हुआ, जो 6 लोग थे उस बोट में वो चारों बिखर गए। इतना प्रेशर था उस विंड का कि बोट ओवरटर्न हुई और वो 6 लोग बिखर गए। I never laid my eyes on them again. उसके बाद डॉक्टर लेमल गलिवर ने लिखा है कि उसके बाद उन्होंने अपने 5 साथियों को कभी भी नहीं देखा कि वो कहाँ बह गए या डूब गए या कहीं किनारे गए। He is not aware. I began swimming in whichever direction the wind and the waves pushed me. डॉक्टर गिलिवर कहते हैं कि डॉक्टर गिलिवर ने स्विम करना स्टार्ट किया। जिस भी डायरेक्शन में, उनको पता नहीं वो कहाँ जा रहे थे, जिस भी डायरेक्शन में विंड और वेव्स, लहरें और जो हवा है उनको ले जा रही थी। क्योंकि अगर आप विंड के डायरेक्शन में ही आप सेल करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो सेल करने में बहुत मेहनत लगती है। ही वॉज ऑलरेडी वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो वो सेल कर रहे थे विंड के डायरेक्शन में, वेव्स के डायरेक्शन में, एंड पूरी ताकत लगा के, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच अशोर। I don't know how many hours I spent struggling, but just when I was completely exhausted and water seemed to be filling my lungs, my feet suddenly touched bottom. अब डॉक्टर गिलिवर लिखते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कितने घंटे तक स्विम करता रहा अपने आप को किनारे ले जाने की कोशिश में, जब मैं एकदम एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, एकदम मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी और मुझे लगा था कि अब मेरे लंग्स में पानी भर रहा है और मैं पानी में डूब के अब आई एम गोइंग टू ड्राउन। उसी समय उनके जो फीट है वो कहीं बॉटम में, सी इज वेरी डीप, तब उनके जो फीट है कहीं बॉटम में टच किए। आई टुक इन सेवरल माउथफुल्स ऑफ एयर एंड लुक्ड अप टू हेवन। तब उनको लगा कि नहीं अब मैं कहीं किनारे आ रहा हूं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पानी से निकल के सांस ली एंड ऊपर हेवन की तरफ देखा। It must have been about 8 in the evening. शाम के वो लगभग 8 बज रहे थे। The storm had decreased. जो तूफान आया था वो धीरे धीरे थम गया, कम हो गया। And there was enough light to make out land about a mile away. और जैसे हम किलोमीटर्स करते हैं वैसे माइल्स भी होता है। पहले माइल्स में लोग जर्नी अपनी कैलकुलेट करते थे। तो उन्होंने देखा कि ऊपर उठा के सिर की करीब शाम के 8 बज रहे थे और जो उनको वहां से दिखा कि जो जमीन वहां से जहां पे वो थे वहां से ऑलमोस्ट 1 माइल अवे थी। एंड उनको लगा कि चलो अब मैं धीरे धीरे फाइनली किनारे पहुंच जाऊंगा। आई स्पेंड द नेक्स्ट 2 hours ट्राइंग टू ड्रैग माई सेल्फ टूवर्ड्स द शोर। वो इतने थक गए थे कि उनको 1 माइल लैंड तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 2 hours, 2 घंटे पूरे लगे किनारे पहुंचने में। I was so weak and tired when I finally limped out of the sea that I dropped down on a patch of soft grass. कह रहे जैसे ही मैं किनारे किसी तरह 2 घंटे में अपने आप को खींच खांच के मैं लेके आया, मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। आई वॉज लिम्पिंग, वो लंगड़ा के किसी तरह जमीन पे गए और जैसे ही जमीन पे वो पहुंचे किनारे पे, उनकी बॉडी, सॉफ्ट ग्रास है ना, एकदम मुलायम घास था वहां पे उनकी बॉडी अब सपोर्ट नहीं कर रही थी और वो घास के ऊपर गिर गए। एंड विद इन मोमेंट्स आई वॉज साउंड अस्लीप। और कह रहे कुछ ही देर में मैं इतना थक चुका था, इतना एग्जॉस्टेड, इतना टायर्ड था, स्ट्रगल करते करते किराने आने के लिए, कि कुछ ही मोमेंट्स के अंदर मैं इतना थकान के कारण मैं तुरंत वहां पे जैसे मेरी बॉडी गिरी उस घास के ऊपर, एंड ही वॉज अस्लीप, वो सो गए। सो ये
बेटा फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट इज इन लेसन 6. सेकेंड पार्ट लेसन 6 दैट इज गिलिवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने शिप पे डॉक्टर पे साइन किया और कैसे उनकी शिप जो है वॉयलेंट स्टॉर्म से लड़ी, टकराई एंड शिप अपार्ट हुई. ओनली 6 men वर लेफ्ट. वो किसी तरह लाइफ बोट में गए. स्ट्रॉन्ग विंड ने बोट को भी ओवरटर्न कर दिया and he couldn't see his 5 of his crew members. He was the only one left and somehow वो तैरते 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 किसी तरह he managed to reach the shore, and the moment he reached the shore he was so tired that he fell down on the soft grass and he was asleep. So beta ये explanation थी lesson 5 की. That's all for today. Please students, do read this lesson, complete the word meanings and meaning of phrases in your English notebook. I'll be continuing with the exercise in my next video. Till then, do read this lesson again and again. Thank you students. Have a good day ahead.